हाँ अभी होगा. Got it. Yes. got it. Got it. Right. Yes. Yes, can I start? Yes, Yes. no. Yes. Please start. Love is a shield to take the power out of other people's negativity and not to be affected by it. Remember the magnetic fields of feelings surrounding each person. There is a field of love, joy, happiness, gratitude, excitement, passion, and a field for every good feeling. There is also a field of anger, discouragement, frustration, hate, desire for revenge, fear, and a field for every negative feeling. Yes. पहले तो क्या लिखा? Love is a shield. ये अपना shield है actually. To take the power out of other people's negativity and not be affected by it. तो उसका shield है ये. Remember magnetic field of feelings surrounding each person. हर आदमी के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है. वो इधर गुड फीलिंग का है या बैड फीलिंग का है. It could be love, joy, happiness, all this thing, or it could be anger, revenge, and all these things. So love, if it is of love, shield is of love, then nothing will enter it. Yes, let's go. A person surrounded by a magnetic field of anger doesn't feel good at all. And so, if you come into their presence, they will most likely direct their anger at you. They don't mean to harm you, but they can't see anything good when they are looking at the world through their field of anger. All they can see are the things that anger them. And because they can only see anger, they are likely to get angry and hurl anger at the first person they see, often a loved one. Does this situation surround familiar? Sound familiar? Yeah. तो अभी एक तो क्या सील्ड होती है, बराबर ना? इधर द सील्ड ऑफ लव, हैप्पीनेस, और इट इज ऑफ एंगर, रिवेंज एंड ऑल दिस. अब जो आदमी एंगर में रहता है उसको कुछ शुद्धि रहती नहीं है. अब माफ करना, वो सारा सब मतलब कोमा में चलता है एंगर पे. तो जो भी सामने आता है उस पे उसका गुस्सा निकलता है, और ज्यादातर उसके लव्ड वंस पे, और जिसको बहुत प्यार करता है, बच्चे है, वो है, जैसे कोई सामने आएगा, he will hurl that anger on them. और ये आप सबको मालूम होगा, सबके यहाँ होता होगा, सबके घर पे ऐसा होता होगा कि हम बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बिकॉज वो हम लोग मास्क पहनते हैं, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड रहेंगे, नाटक करेंगे. और जब घर पे आते हैं तो हम अपना एक्चुअल वो दिखाते हैं. जहां पर हमको प्यार देना चाहिए वहां हम गुस्सा दिखाते हैं. यस, लेट्स गो अहेड. पर ये सिचुएशन बहुत जन के घर में होगी, आप माफ करना. इफ यू आर फीलिंग Okay. हाँ. इसके लिए हरीश साहब बोलते हैं ना, द ट्रू कलर ऑफ द मैन कम्स हाँ. आउट द क्रक्स ऑफ लाइफ इन टाइम. तो देखिए, या इन टाइम. Yeah, when there is a bad time, you just know the people, like you come to know the people who are very close to you, who really want to be with you. Like, yes, the true color देखिए तभी तो when the thing, on the other hand, if a person No. hurls something If you're feeling fantastic. If you're feeling fantastic, ऊपर से एक मिनट हरीश भाई, एक मिनट. If you're feeling fantastic, the force of a magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. And so it won't matter that negativity, what negativity anyone hurls at you. It cannot touch you and it will bounce right off your feeling field without affecting you at all. At all. जो आपकी अच्छी फीलिंग होगी, if you are with a good feeling, आप लव में हो, तो कोई कितना भी आपके सामने नेगेटिव फेंके, it won't go out, मतलब through the shield, it will bounce back, नीचे गिर जाएगा. Yes. On the other hand, if a person hurls something negative at you and you feel what they say, then you know that your feelings must have dropped because the negativity broke through your feeling field. There's only one thing to do if this happens, and that is to find an excuse to politely walk away so you can restore yourself with good feelings. Two negative fields multiply at a rapid rate when they come into contact with each other, and no good can ever come of it. You will know this from your life experience
two negative fields together are not a pretty sight. हाँ, तो दो नेगेटिव फील एक साथ में जाए तो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और उससे कुछ बना नहीं सकता है किसी का भी। ये हर घर की कहानी है। अब बात करना, जब दो आदमी झगड़ा करते हैं तो दोनों एक दूसरे को ऐसा ब्लेम करते हैं एज इफ दैट फील इज राइट, तो उसमें कोई बना नहीं है। तो जो आदमी नेगेटिव फीलिंग में या फील नेगेटिविटी का है तो उस पे कोई आदमी कुछ फेंके तो जल्दी से वो आदमी का गुड फीलिंग से बैड मैच, थोड़ा भी खुश हो आदमी शांति से बैठा है और कोई किसी ने बोल दिया उसको, हिज फीलिंग विल ड्रॉप बिकॉज ही इज ऑलरेडी सील्डेड बाय नेगेटिविटी, और सील्ड नेगेटिविटी का है। तो उसका क्या होता है, उसको बाहर आने के लिए गो टू दैट गुड फीलिंग, उसको सब करना पड़ता है अगेन टू कम टू गुड फीलिंग, क्योंकि दो नेगेटिव फीलिंग साथ में रहेंगी तो सब बर्बादी होगी, नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ इट। यस, Muddy water, let stand become clear. Lao Tzu, and founder of Taoism. ताओइज्म, ये बोलते हैं मडी वाटर, पानी गंदा है, लेट्स स्टैंड, खड़े रहो, बिकम क्लियर मतलब अपना मड गिर जाएगा। सो एंगर में भी वही करना है, व्हेन यू आर एंग्री बी काम, अपना वो निकल जाएगा। इतना एक लाइन मस्त लिखा है, मडी वाटर लेट्स स्टैंड। बहुत बढ़िया है जी, वेरी गुड। पर ये फैक्ट है ना कि आदमी जब गुस्से में होता है ना मोहन जी, उसको कुछ दिमाग में नहीं चलता, उसका दिमाग चलता नहीं, और वो इस ईगो में आ जाता है कि मैं अपने आप को राइट प्रूव करूं, रॉन्ग होते हुए भी वो अपने आप को राइट प्रूव कर जाएगा, या उसको राइट दिखता भी नहीं कई बार, वो रियली समझते हैं मैं राइट हूँ। जब हम अपने बच्चे के साथ कुछ बात करते हैं तो वो दिमाग इतना खराब होता है ना, हम उसकी बात सुनते ही नहीं है। तो वी हैव टू बी काम, थोड़ा काम हो जाएंगे ना सब नीचे गिर जाएगा। Yes, जो भी थोड़ा बुद्धि देके वो भी भ्रष्ट हो जाता है एंगर में। Yes, Falguni. If you are feeling sad, disappointed, frustrated, or any negative feeling, then you are looking at the world through that feeling field, and the world will look sad, disappointing, or frustrating to you. You cannot see anything good through a field of bad feelings. Not only is your negative feeling attracting more negativity to itself, but you will never see your way out of any problem until you change the way you feel. Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. All the physical action in the world cannot change the situation. Change your feelings and the outside circumstances will change. See, last जो लिखा ना, change your feelings and the outside circumstances will change. ये बहुत बढ़िया बात है, क्यों जब आदमी बैड फीलिंग में, नेगेटिव फीलिंग में है, उसको सब कुछ नेगेटिव दिखता है। आपने लाल कलर का चश्मा पहना है तो आपको सब चीज लाल दिखेगी, आपने हरा पहना तो हरा दिखेगा। तो यू हैव टू रिमूव दैट ग्लासेस, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग आउटसाइड जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं करोगे, क्यों आउटसाइड वर्ल्ड तो अपने आप चल रहा है, इट इज मेड बाय मेनी पीपल, आप अकेले नहीं हो। बट इफ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव तो सब अच्छा लगने लगेगा। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, हाउ टू रिमूव दैट स्पेक्टिकल, द कलर। इसके लिए देखिए बोलते हैं ना जी, वी कैन चेंज ओनली वन पर्सन इन द वर्ल्ड एंड दैट इज ourself. The person in the mirror. Person in the mirror. देखिए, The power is from within, but we cannot receive it unless we give it. Charles Haanel, the New Thought author. ये कितना मस्त बोला है, the power is from within, आपके अंदर से पावर आता है, but you cannot receive it unless we give। क्यों? आपके अंदर बैठा रहेगा पावर, वो क्या काम करेगा? जब तक आप निकालोगे नहीं और दोगे नहीं, उसका कोई यूज ही नहीं है, वो सड़ जाएगा। Yes. When someone is surrounded by a magnetic field of joy, you can feel their joy touch you from across the room. People who are popular and who have magnetic personalities are simply people who feel good most of the time. The field of joy that surrounds them is so magnetic that it draws everybody and everything to them. बस जो आदमी खुशमुना है, सुखी है, खुशी का भंडार है, वो हर आदमी को अट्रैक्ट करता है, भले लंबे से भी वो आदमी अट्रैक्ट होता है उससे।
तो खुश रहना इसके लिए बहुत जरूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो सबको अट्रैक्ट करेगा और आपके पास लेके आएगा और उनको खुशी देगा। दे विल टच दैट हैप्पीनेस, उनको महसूस होगा वो। ओके, यस। The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes and more it expands, drawing everything and everyone you love you love to you. Imagine that. The more you give love and feel good, the more magnetic field your field become. जितना ज्यादा लव, इतना आपका जो फील्ड है आपके अराउंड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ये होता है निकलता है, more magnetic becomes, sorry, and it does more and more, you know. जितना प्यार जितना आप खींचोगे, जितना अट्रैक्ट करोगे, उसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, पावर। ये सब आगे ले एक सेकंड। कोई नहीं। Love is the power. Love is the power. Eh, love is the power that connects everything. When all people in the world love one another, then the strong will not overpower the weak, the many will not oppress the few, the wealthy will not mock the poor, the honored will not disdain the humble, and the cunning will not deceive the simple. Mozi, a Chinese philosopher. When all people in the world love another, सब एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, then the strong will not, मतलब जो आदमी ताकतवर है वो कमजोर को हैरान नहीं करेगा। बहुत सारे आदमी फ्यू आदमी को हैरान नहीं करेंगे, ऑप्रेस नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं। जो आदमी बहुत पैसे वाला है वो मजाक नहीं उड़ाएगा गरीब की। जो ऑनर्ड है और रिस्पेक्टफुल है वो हम्बल को ऐसा नकारेगा नहीं। जो कनिंग है वो डिसीव नहीं करेगा, क्योंकि प्यार ही प्यार है। ये सारी बातें वो तो गंदी बात है, सब नेगेटिविटी है। तो when there is love, you will start cooperating. There will be no competition. Competition will end and cooperation will start. Yes. You have opportunities every day to give love to other people through your good feelings. When you feel happy, it is your guarantee that you will be giving positivity and love to whomever you come into contact with. When you give love to anyone, the love will return to you, but in a far greater way than you may have realized. आप जितना प्यार दोगे उससे कई ज्यादा वापस आएगा। But you have every day, every day आपको opportunity है to give love. जब आप खुश रहते हो, it is a guarantee that you will be giving positivity. Guaranteed. आप खुश हो तो आप पॉजिटिविटी दोगे, प्यार ही दोगे, और जितना दोगे उससे ज्यादा आएगा। Yes, ma'am. When you give love to another person, if your love affects the other person so positively that they can give love to someone else, and though no matter how many people are positively affected, no matter how far your love travels, all that love comes back to you. Not only do you receive back the love you gave to the original person, you receive all the love back from everyone who was affected, and the love returns to you dressed as positive circumstances, positive people, and positive events in your life. Yeah. आप जब प्यार दोगे, if you love people, people feel loved और वो आगे देता है। ये चेन बन जाती है और वो पूरा लव आपको वापस मिलता है। How? पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे, पॉजिटिव पीपल मिलेंगे, कुछ इवेंट्स बन जाएंगे, so you will get all this love back. It will again come to you. On the other hand, if you negatively affect another person so much that the person goes on to negatively affect someone else, then the negativity will return to you in full. You will receive it back in the form of negative circumstances affecting money, your career, your health, or your relationships. Whatever you give to another person will give to yourself. नहीं, ऐसा लिखा है, whatever you give to another, you give it to yourself. मतलब आप खुद अपने आप को दे रहे हो। आप जब किसी और को देते हो, आप खुद अपने आप को देते हो। तो ये मत लिखा है कि if आप नेगेटिव फीलिंग में हो
और आप निगेटिविटी पास कर रहे हो किसी को, वो और किसी को पास करेगा और पूरा माहौल नेगेटिव हो जाएगा। और वो होता क्या, नेगेटिविटी वो खाली दूसरों को नहीं, वो आपको भी बोलेगा, कुछ और को भी देगा, एंड एवरीथिंग विल कम बैक टू यू। तो आप अपने आप को दे रहे हो और किसी को नहीं। यस, Right. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to Power. revoke at any moment. मार्कस Marcus Aurelius. Aurelius, Roman Roman emperor. Emperor, नाम ही एकदम Emperor. गजब है। If you are distressed by anything external, बाहर से कुछ डिस्ट्रेस आया है, पेन इज नॉट ड्यू टू थिंग इटसेल्फ, वो चीज से आपको पेन नहीं है, बट आपका एस्टिमेट जो है उसका, अरे बहुत खराब हो गया, अरे ठीक है, जो आप एस्टिमेट करते हो, आप जो अंदाज लगा दो, उतना पेन आपको होता है। बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट, मतलब आप जो एस्टिमेट करते हो उतना पेन लगता है, वो चीज से इतना पेन नहीं है जितना आपके एस्टिमेट से है। एंड दिस यू हैव द पावर टू रिवोक एट एनी मोमेंट। आप इसको रिवोक कर सकते हो, पेन को निकाल सकते हो। और ये आप देखो खास करके बच्चों में, एक लड़का आपके कारण गिर गया तो जोर से रोएगा, और वो खुद गिर गया तो उठ जाएगा, ऐसे ही कुछ नहीं करेगा, अपने आप को झटक लेगा, इंस्टेंट। बच्चों में आपको जल्दी दिखेगा कि वो नाटक नहीं करते ना, उनको तो बस आपने गिरा तो उनको गुस्सा आया। इसके लिए बोलते रहे, we can always learn from children. Yes. The best teacher is your own child only. वो एकदम मतलब सच्चे है बस। उन्होंने आपको गुस्सा आया तो गुस्सा कर लिया, आपने क्यों गिराया, वो खुद गिरे तो बोल ठीक है। Natural रहता है। Yes. When you are feeling enthusiastic, happy, and cheerful, those good feelings Good feeling. affect everyone you come into contact with. Even if you connect with a person who is just briefly in a store, on a bus, or in an elevator, when your good feelings make a difference to any person you connect with, the effect of that one instance on your life is almost comparison. आपके Comprehensible. Comparable, incomprehensible, incomprehensible. इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो आप एंथुसियास्टिक में हो, आप हैप्पी हो, एक्साइटेड हो, चेयरफुल हो, तो आप किसी आदमी को मतलब एक दो मोमेंट के मिलो और उसको पास कर दो, क्योंकि कंटेजियस है। ये जो फीलिंग है बहुत कंटेजियस है, फटाक से लग जाती है किसी को। तो इफ यू पास इट टू समबडी एल्स बाय ब्रीफली मीटिंग देम, तो ये आपको जो खुशी देगी, आपको जो बेनिफिट, आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो आदमी में भी, तो वो आप मतलब समझ ही नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे, इतना हो सकता है। When your good feelings make a difference to any person you connect with, effect of that one instant, वो एक इंस्टेंट का जो इफेक्ट है वो आप कभी सोच नहीं पाओगे, इतना भी हो सकता है, इतना फायदा होता है किसी को, और वो आपको भी मिलता है। यस संदीप, आगे चले। Remember, there's no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. Scott Adams, cartoonist. Cartoonist. Remember, there is no such thing as a small act of kindness. हर एक जो काइंडनेस का है उसका एक रिपल बनता है, एक वेव बनता है। वी आर सराउंडेड बाय एन एनवायरनमेंट, उसमें एक वेव बनता है which is no logical, वो चलता ही रहता है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरे पे वो चलता रहता है, तो कोई छोटा नहीं है। Yes. Love is the solution and the answer to every relationship. You can never improve a relationship with negativity. Use the creation process for your relationships and give love to receive. Use the keys to power for your relationship. Notice the things you love. Make list of the things you love. Talk about the things you love and turn away from the things you don't love. Imagine having the perfect relationships. Imagine it at the highest level you can and feel having it with all your heart. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in the relationship. Yes. तो लव इज द सॉल्यूशन। हर चीज के लिए, हर रिलेशनशिप में लव इज द ओनली सॉल्यूशन। इट कैन इंप्रूव ऑल द नेगेटिविटी इन द रिलेशनशिप। और उसके लिए आपको अपना क्रिएशन प्रोसेस याद करना है। इफ यू रिमेंबर कि इमेजिन, देन फील एंड देन रिसीव इट।
आपको जो भी चाहिए उसको आपको इमेजिन करना ये हो गया है, उसका फीलिंग लाना अंदर कि मुझे फाल्गुनी से कुछ झगड़ा गया है, बाद में मैं एकदम इमेजिन करता हूँ, नहीं मिला फाल्गुनी को, मैंने सॉरी बोला, शी इज हैप्पी, शी इज स्माइलिंग, ये फीलिंग लाता हूँ एंड देन आई रिसीव, आई विल गिव द लव एंड यू विल गिव बैक। तो वो क्रिएशन पावर से वापस हमको करना है एंड दैट इज की टू पावर। रिलेशनशिप में एक की काम आती है। तो नोटिस थिंग्स यू लव, मेक लिस्ट। जब आप नहीं हो और मतलब पसंद है कोई चीज, तो नोटिस द थिंग यू लव, मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लव, टॉक अबाउट दिस। मतलब ये क्रिएशन करने के पावर के प्रोसेस के लिए बोला है ब्रो। एंड टर्न अवे द थिंग्स यू डोंट लव। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसको देखो, उसका लिस्ट बनाओ, उसको सोचो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दैट प्रोसेस। मतलब क्रिएशन प्रोसेस चालू करिए। इमेजिन हैविंग परफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा सोचिए कि मेरा मेरा फाल्गुनी एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप है, हम एकदम बहुत ही एक दूसरे को समझते हैं। इमेजिन इट हाईएस्ट लेवल, मैं एकदम हाईएस्ट लेवल पे सोचता हूँ कि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे को फाल्गुनी नहीं बोलेगी, या आप बोलोगे मैं जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी हरीश भाई मेरे लिए खड़े होंगे। तो ये सारा इमेजिन करना है एंड फील हैविंग इट विथ योर हार्ट। उसको आपको फील करना है, आपका आ गया है। चलो एक एक से ऊपर लाइन पसंद, लास्ट लाइन क्या था वो मस्त था लाइन, आई फॉरवर्ड एंड जस्ट स्टॉप नोटिसिंग the negativity things in the relationship. No. If you find it difficult to feel good, if you find difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you. आपके आजू बाजू जो है सबको प्यार दीजिए. Just stop noticing the negative things in the relationship. और रिलेशनशिप में जो नेगेटिव पार्ट है उसको छोड़ दीजिए, उसको मत देखिए, उसको फीलिंग मत दीजिए। नहीं तो हम क्या, उसको फीलिंग देंगे तो फीलिंग बढ़ेगी। ये सॉरी सॉरी, वेरी गुड लाइन। Yeah, very good. जो आपने Love बोला can do शिल्पा जी को any बोला था कि आपने शिल्पा जी को बोला अगर घुटना दर्द कर रहा है तो बाकी सबको आप ज्यादा थैंक्स दो। हाँ, बी And then ग्रेटफुल you- बाकी शरीर अच्छा है अपना। तो धीरे धीरे यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रांग और अच्छा लगने लगता है। और एंड यू आपका माइंड क्लर का स्लिप क्या होता है, आपका घुटना देखो उस पर आप फोकस करोगे ना तो दुखते ही रहेगा। आप और जगह फोकस करो, थोड़ा दुखना कम होगा ऑटोमेटिक वही टाइम। एंड सेकेंडली योर माइंड इज ओपन टू रिसीव समथिंग एल्स। तो आपको घुटने के लिए क्या करना है, ना तो आप तो टेंशन में रहोगे तो गया कौन से। यस यस, ओके गो अहेड। love can do anything for you. All you have to do is to give love by feeling good, and any negativity in your relationship will fade away. Whenever you are fade away. Whenever you are faced with a negative situation in a relationship, the solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how. But if you maintain feeling good and give love, it will happen. हाँ, तो लव कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बराबर ना। आप गुड फीलिंग में रहोगे तो कोई भी नेगेटिव रिलेशनशिप अपना फेड हो जाएगा, अपना उस पर प्यार उमड़ेगा वो आदमी में। सो व्हेन यू आर फेस्ड विद नेगेटिव सिचुएशन इन रिलेशनशिप, एक ही सोल्यूशन, वो है लव। आपको नहीं मालूम कैसे होगा, पर वो अपना आप हो जाएगा। वो देते रहोगे, अपना आप फेड होता रहेगा और अपने आप वो बदलाव आ जाएगा उसमें। यू कैन नेवर नो हाउ, बट इफ यू मेंटेन फीलिंग गुड एंड गिव लव, इट विल हैपन। तो होना ही होना है। ये मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड जू, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद। हाँ, ये सब ने मैसेज दिया, आप देख लो। आप किसी का भी स्क्रिप्चर पढ़ लो, बुक पढ़ लो, एंड एवरी ग्रेट बीइंग इज लाउड एंड क्लियर, जस्ट लव। आप बुद्ध भगवान देखो, हमारे महावीर भगवान देख लो, आप जीसस देख लो, मोहम्मद देख लो, हर ने यही बोला। बाद में किसी ने इंटरप्रेट अलग किया, अलग बात है। यस, इसलिए देखिए बोलते हैं ना, all the enlightened souls speak only one language, that is a language of love. हर एक स्क्रिप्चर में अलग, एक मिनट, हर एक स्क्रिप्चर में अलग अलग लव योर नेबर, लव योर ब्रदर, अलग से लिखा है, पर सबने वही लिखा है कि प्यार। यस, Points of power. With every single person you come into contact, you are either हमको आ रही है आवाज? मुझे नहीं, किसी आवाज आ रही है, सडनली हम चेंज लोग को हो आ गया, रही है। टोन देखिए चेंज हो गया, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है, हरीश भाई का कुछ ये हुआ है। सॉरी मेरा कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, पॉइंट ऑफ पावर। points of power. With every single person you come into contact, you are either giving love or you are not. And based on what you give, is that what you receive. यस, नहीं मैं पढ़ Give love. पढ़ो मैं सर। हाँ, पढ़ते रहे। Give क्या पॉइंट give love.
Give love to others through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you multiplied in every area of your life. Look Multiplied. for the Yes. things. Look for the things you love in a relationship more than you notice negative things, and it will appear as if something incredible has happened to the other person. Trying to Incredible as change. well. Yes. hmm, Trying to change another person, thinking you know what is best for another person, thinking you're right and another person is wrong, is not giving love. Not giving up. ये बहुत बढ़िया लिखा है, trying to change another person. ये सबसे महत्व का एक्चुअली हम लोग वही करते बार बार। हम लोग एक की एक मिस्टेक बार बार करते हैं, तीसरे को बदलने जाते हैं, समझाने जाते हैं। हम खुद बदलते नहीं है, खुद में बदलाव लाते नहीं है, एंड वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अदर्स। We want the whole world to change without changing ourselves. Yeah. You have to be happy to receive happy no, versions of criticizing- नहीं other क्रिटिसाइजिंग ब्लेमिंग Criticizing, criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. You have to be happy to receive the happy versions of other people. The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. My goodness. You can stick everything you love and want you by looking for the things you love in other person and saying yes to those qualities with all of your heart. You can talk about or your negative and You have a can't. good You feeling. can't talk about. Sorry, you can't talk about or your negativity and have good feelings. Yeah. Life is presenting every person and circumstances to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings, and as you do, you are choosing it. Yes. You can't change. You can't change. Uh, You एक can't मिनट है, change. You can't change a negative situation with bad feelings. If you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply the negativity. If you're feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. Change your feelings, and the outside circumstances will change. The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes, and the more it expands, drawing everything and everyone you love to. Yes. Right. चलो मैं भेजूंगा आपको पॉइंट ऑफ पावर तो आज. So that was good. ऐसे थे 12 पेज संदीप, पर देर आर सम पिक्चर्स ऑन तो पेज छोटे थे, जल्दी खत्म हुआ. बट जो लिखा है ना रिलेशनशिप के लिए बहुत ही उम्दा लिखा है इन्होंने. समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. मजा आता है कभी कभी इस सुन के. Where she writes every point she mentioned, you know, बहुत अच्छा लगता है. Every sentence Anyway. is a jump. Yes. Yeah. मैं क्या बोलता हूँ मोहन जी, ये चीज ना अपने घर पे वापरो जी. सबसे पहले Right. we can make our family really happy, Happy. peaceful, calm. हम लोग बात बात किटपिट करते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे हम नाराज होते हैं, सब बंद होता है. बट इसके लिए बहुत पावर लगती है, पेशेंस बहुत लगता है. नहीं Not that easy. या ट्रू. मुझे क्या लगता है सर, जब तक देखिए ना अवेयरनेस नहीं होगा, कॉन्शियसनेस ये नहीं होगा, देखिए पढ़ने से देखिए सबको मालूम पड़ता है मे बी टेम्पोररीली, लेकिन वो सस्टेनिंग नहीं होता है. तो इसके लिए देखिए हमारे वेदास में जो बताया गया, हाँ भाई ये सब अचीव करने के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम लोग वो करते नहीं है. दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज सफरिंग. तो जब तक देखिए नो हम लोग सुधरेंगे नहीं, तो देखिए हम कैसे सोच सकते हैं दूसरों को सुधारने का सवाल ही पे नहीं होता है. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद मी, एवरीथिंग स्टार्ट्स With me. Everything started with me. Yes. एवरीथिंग. राइट. मैंने अभी संदीप भाई ने माँ क्या होगा, मैंने बहुत चेंज लाया अपने आप में, अपने बच्चों के साथ इसमें कि ज्यादा वो पहले एक आदत थी. क्या होता है ना मोहन जी, जब हम ये पढ़ते ना बुक्स,
सबसे पहले हम क्या समझते हैं, हम पंडित हो गए, Right. सबसे पहले मुझे सब मालूम है, मालूम मैं है, सब समझता हूँ। आई नो, देखिए ये जो है ना जाना चाहिए, आई नो। हाँ, तो जब हमने लैंडमार्क कोर्स किया था ना, वो टाइम उन्होंने बोला था कि आप यहाँ से जो सीखोगे वो बात आपको बाकी पे हावी नहीं करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ स्टूडेंट, यू लर्न समथिंग, तो आप में बदलाव आया है, आपको बदलाव लाना नहीं किसी ने, आपको बदलाव दिखाना है। यू टू शो एवरीवन दैट यू आर चेंज, वो अपना बदलेंगे। हम क्या करते हैं, मैंने ये पढ़ा था और मैंने सुना था, आप समझते नहीं हो। एक्चुअली वो समझते नहीं, बोलना ही बंद करना। बंद होना चाहिए। आई थिंक वी आर द पर्सन हु डोंट अंडरस्टैंड थिंग, और Right. बाकी सब समझते, उल्टा है। तो उसमें बदलाव लाना है हमें, Right. और वो बदलाव आ गया ना, बहुत फर्क Yeah, स्टार्ट विद योरसेल्फ, और हम yeah, सबको ये करना है। right. और सबसे बड़ी है ना, आप एक्सरसाइज करो एवरीडे, गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर Right. एंड डू योर एफर्मेशन। Affirmation. आपको जिंदगी में नहीं करना, पर कम से कम 20-25 दिन करिए, देखो क्या मजा है। अब मैंने बहुत सारे एफर्मेशन, उसमें आपको 7-8 ढूंढना है। अपन यू कैन गो ऑन इट विद 21-31 एफर्मेशन। आप 7-8 मेन ढूंढिए एंड डू दैट एफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ मिरर। When you're talking to yourself, it is very difficult to lie. और आप lie भी करोगे तो सच हो जाएगा। Yes, you're turning to yourself. बहुत बड़ी बात है। तो this is very good chapter, कि सबसे महत्व का कोई है तो रिलेशनशिप है। एक मूवी बना था जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, अकेला एक आदमी बचता है और दुनिया का सब एबंडेंस उसके सामने है, पर कुछ काम करना है, टोटल यूजलेस, उसको सुसाइड करने का मूड आता है, हेल्पलेस। तो आप अकेले हो तो कुछ काम के नहीं हो, आपके साथ कोई है तो ये जिंदगी का मजा है, आनंद है। Wonderful ठीक है? session, sir. Wonderful. Yes sir, नहीं बहुत Yeah, thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, madam. Thank you so for much. बट reading प्लीज nicely. प्लीज Yeah. मेरा एक Thank you. बोलना आप सबको, आप ये अपना उतारिए एंड बी अ चेंज, डोंट ट्राई टू चेंज एनीबॉडी, प्लीज स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। Do the affirmation, stand in the front of mirror, do the affirmation and change yourself and change your life. मैं बोलता ना मोहन जी, हम नेक्स्ट सेशन करेंगे ना और आदमी जुड़ेंगे, जो हमारे में विश्वास आ गया ना अभी, now we have faith, we can give it to others. भावना मैम, thank you. Thank you. Thank you. This is the best message of this one. Thanks. Yes, Okay sir. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.